Jaya Jaya Navala Kishore Jaya Gopi Chitchora Prabhu Jaya Jaya Makhana Chor Jaya Jaya Makhana Chor Shri Krishna Chandra Bhagwan ki Jagat Guru Srila Prabhupada ki उपस्थित भगवत कथा अनुरागी Hare Krishna, I welcome you all, the devotees who have gathered here. I especially would like to welcome the senior Vaishnavas of the International Society of Krishna Consciousness who have decorated this assembly. I would like to welcome all the attendees, devotees who have gathered from all the parts of the world through the medium of YouTube, Facebook, etc. श्रीमद् भागवत कथा एवं अक्षय तृतीया के So I welcome you all on the great festivity of Akshay Tritiya's Bhagvatam Katha. आप सभी भक्त I welcome you all, एवं and in particular कनाडा निवासी the residents of Canada, श्री सुरेश भाई Shri परमार Suresh Bhai Parmar एवं उनका and समस्त परमार his परिवार family भगवत कथा के तृतीय who have दिवस में organized this katha. So I welcome you all on the third day, एक स्वागत एवं and आप सबके चरणों our में humble obeisances at your lotus feet. एक परेशानी है So I have one distress, क्या है और बड़ी परेशानी है and it's a huge obstacle. परेशानी ये है कि कुबेर का खजाना मेरे पीछे खुला हुआ है और इस So कुबेर के खजाने से इतने सोने के सिक्के गिर रहे हैं I have this distress that सब भर चुका है sorry, that तो अब आप all the जानते coins हैं are falling from the pot और of इस this Kuber's कुबेर के खजाने से आप भी इस धन fortune, को and my home is filled. इस समृद्धि So को I would like you all to come and सो बहुत take सुंदर पर्व some from here. भारत में आज और अमेरिका कनाडा में कल So अक्षय तृतीया का महा महोत्सव मनाया we will be जाएगा celebrating the Akshay Tritiya Maha और इस Mahotsav, अक्षय तृतीया के पावन उत्सव में and on this हम auspicious सब day, अक्षय तृतीया की महिमा श्रवण कर रहे हैं we are listening to the glories of this श्रीमद् divine भागवत transcendental day. और अन्य पुराणों के माध्यम से जैसे कि कल हमने We are taking the reference from मत्स्य पुराण Shrimad से Bhagavatam and Puranas, अक्षय as तृतीया की yesterday महिमा we श्रवण किया referred the एक glories काम करते of हैं Akshay Tritiya from आज Matsya पद्म Puran. पुराण में चलते हैं So now today we are going to discuss पद्म पुराण में एक the ऐसा glories प्रसंग है from Padma जब Puran. वसुंधरा देवी पृथ्वी अपने पति भगवान वराह देव से There is a reference in Padma Puran where निवेदन करती है कि God, प्रभु Mother Earth ये अक्षय तृतीया request की her जो महिमा husband है Varaha Dev मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूँ
about the glories of Akshay Tritiya, I would love to hear from you. So, Mother Earth asked, and Varahadev answered, and this was composed or written by Vedvyas ji in Padma Purana. The verse is in front of your screen. तृतीयायाम शुक्लायाम मासी माधवे प्रवृत्तश्च तयि धर्मा। त्रेतायुग की महिमा, अक्षय तृतीया की महिमा। प्रवृत्तश्च त्रयी धर्मा प्रवृत्तास्ते प्रवर्तिता प्रवृत्तास्ते प्रवर्तिता। भगवान वराह देव श्री धरती देवी को, धरती माता को, वसुंधरा को कहते हैं। So Lord Varahadev answers to his wife Vasundhara or Mother Earth that what happened on this day. So in this month of Madhav Mas, on the third day of the lunar calendar, that is Tritiyayam, in Treta Yuga, that is in Treta Yuga, so we need to conjoin this Tritiyayam, Shuklayam, Masi Madhave, that is the month Madhav, and in the Shukla Paksh, the third day, Tritiyayam. On this day in Treta Yuga, what happened? So Treta Yuga started on this day. This is the same yuga where the self-righteous Ramji incarnated. And so till yesterday we have heard about the 4 glories of Akshay Tritiya. That is the conjoining of the 2 seasons. Then the second, the starting of the Chandan Yatra by Madhvendra Puri. And the third is the manifestation of wheat. And the fourth is the starting of Satyuga on this day. And the third or fifth that we heard yesterday was that Lord Sun gave Akshay Patra to the Pandavas during their exile. So the 6th glory is presented in front of your screen in this verse. So it says that the Treta Yuga started on this day. And the 7th glory is in the 3rd and 4th line. And on this day, 3 types of religions, that is 3 dharma, which are told were changed, parivartita. So to understand this word Trai Dharma, we should take the reference or the shelter of Sripad Sanatan Goswami. He has interpreted this word from Padma Puran
का प्रवर्तन हुआ था, त्रेता युग का प्रवर्तन हुआ और त्रिधर्म का प्रवर्तन हुआ। तो त्रयी धर्म का अर्थ क्या है? तब नीचे सनातन गोस्वामी कहते हैं, So in the below screen, if you see, there is a reference or interpretation of Sanatan Goswami of this three dharma word. It says the three Vedas अर्थात तीन वेदों में जिस धर्म का निरूपण किया गया है, so what the righteousness or dharma was manifested in these three Vedas started on this day of Akshay Tritiya. प्रवर्तन अक्षय तृतीया के दिन हुआ। अब ये तीन वेद, वैसे तो आप सबने सुना होगा, so you might have heard कि वेद चार है, that the Vedas are four in number: Rig Ved, Sam Ved, Atharva Ved and Yajur Ved. परंतु मुख्य तीन वेदों को गिना जाता है, but mostly three Vedas are counted or considered as Yajur Ved has the rituals of black magic, etc. So the sages consider only the three Vedas as major Vedas. धर्म का प्रवर्तन हुआ। कौन से धर्म का? फिर से मैं आपको श्लोक में दिखाऊं, त्रयी धर्मा। So Trayi Dharma or the three Vedas that describe the righteousness or dharma that was started on this day, Parvardata. अब तो वेद पढ़ने पड़ेंगे, और हमारे वेदों में, शास्त्रों में अनेकों जगह पर धर्म की, our Vedas and scriptures, there are many places where the references are given about righteousness or dharma. But today we are going to discuss in particular about the pastime where Yudhishthirji asked Bhishma Pitama about the righteousness or dharma. Then Bhishma Pitama requests Yudhishthir Maharaj or replies that you're asking what is dharma, but it is an uphill task to tell about dharma. Your question is amazing, and to speak about this dharma is difficult, very rare. It is like so many people gather and they ask a doctor, what should we do or eat? So every person has a difficult body type, physical attributes, etc. So that doctor knows, but what is relevant for whose body type is different. Similarly, all the living entities in this world have different levels of consciousness, and because they have different levels of consciousness, therefore their righteousness or dharmas also change according to their level of consciousness. So students are not to be told to sit in one grade. Everybody has their own level of understanding. So accordingly, they should be given
the grade. करके मुझे धर्म के विषय में बताइए। तो कहते हैं कि ये दुर्लभ है और दुष्कर प्रति संज्ञातु, इसे समझाना दुष्कर है। He says that it is very rare and to tell about it is very difficult. महाराज ने कहा ठीक है, आप सबके लिए कौन किसके लिए क्या धर्म ये मत बताइए, लेकिन ये तो बताइए कि ये धर्म का प्रवर्तन क्यों किया गया। So he said that at least if you can share with us that why this righteousness or dharma was started. तीन वेदों में जो बताया गया उस धर्म का। तो ये प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि धर्म का प्रवर्तन क्यों। So this is the question that Yudhishthira Maharaj is asking, that why this righteousness or dharma was perverted or done. And he answers, dharma pravachanam kritam yah syat prabhava sanyukta sadharma iti nishchayah। पितामह भीष्म कहते हैं, so Pitama Bhishma asks or answers, नाम जीवा नाम संसार के जीवों के प्रभव अर्थाय, संसार के जीवों so he says that for the betterment of all the living entities, so he is asked that why this dharma was introduced on this day of Akshay Tritiya. So Bhishma Pitama replies that true, हम सब लोग किसी ना किसी धरातल पर किसी ना किसी चेतनीभूत अवस्था में है। to develop the consciousness of every living entity. So consciousness is our thought process, our behavior, etc. So how we are going to progress from one consciousness to the further greater consciousness. And for that reason, this dharma was introduced. Pravartate means introduced. कि संसार के जीवों की चेतना को ऊपर उठाने के लिए, हमारी मन स्थिति, हमारे हृदय, हमारे चित्त, हमारी आत्मा को ऊपर उठाने के लिए, to raise our consciousness, dharma or righteousness was introduced. And in other words, Bhishma Pitama says, in this world, the work by which our consciousness can be raised or become pious or pure, so that is dharma for us. और वो प्रगति करे, वो उस चेतना से वो आगे बढ़े, तो सधर्म इति निश्चय, वही हमारे लिए धर्म है। सो धर्म का प्रवर्तन हमारी चेतना को ऊपर उठाने के लिए किया गया है। चेतना समझते हैं, इस संसार में मनुष्य जाति में यदि हम देखें तो सबसे निकृष्ट, so what is this consciousness? So if we see in the living entities, जो मनुष्य को मार देते हैं, जो the animals who kill others, like terrorists, they are called, or they are at the lowest consciousness in living entities. So there is other is who don't kill humans, but they kill animals and they eat them. They are a little
better in consciousness than them. So, who is in a greater consciousness is the one who never ये उससे भी ऊपर की चेतना है. अच्छा, उससे disturbs or distresses any living entity, like even insects or animals or humans. लेकिन उन पशुओं की सेवा करना, And above that is the consciousness of a person who takes care of these living entities, who serve them. And the greater consciousness than that is that these are all the part and parcel of the Lord, so we should love them because we love the Lord, so we should love them as well. So this is the topmost in consciousness. But in that also there are stages or different levels or forms of love towards the Lord. So from where our consciousness raises to upward consciousness, then that is the dharma or righteousness for us. जैसे मैं वो पहले कहता था ना कि एक आदमी एक दिन में 50 सिगरेट पीता था, फिर उनको थोड़ा सा दर्द होने लगा, शरीर में प्रॉब्लम होने लगी, डॉक्टर के पास गया. So as I have already given an example previously, that a person who used to smoke 50 cigarettes a day, so the doctor told him that you will kill yourself, so why don't you reduce it to 30? So he said that from today I'm not going to consume 50, but I will consume 30. So now you tell me whether it is good or bad, or is it good? यदि वो अच्छा है तो जगदीश भाई तमिल उठाओ, आप बोल रहे हो ना, यदि वो अच्छा है, So if he is doing the right thing, 30 सिगरेट पीना अच्छा है तो आप लोग भी पी लीजिए, then you should also start क्या smoking. कहेंगे? But what will we say? उनके लिए अच्छा है, We'll say that it is relevant or better for them, हमारे लिए वो अच्छा नहीं है. but not for us. इसका अर्थ ये हुआ कि It उनके लिए means धर्म अलग, क्योंकि उसका लेवल अलग है. for them the वो dharma is उसका काम different करता है 50 because their सिगरेट level of consciousness is different and our is लेकिन different. हमारे लिए तो वो अधर्म हो जाएगा. तो धर्म में भी लेवल के अनुसार होता है. बहुत सुंदर ये टेक्निकल सब्जेक्ट है. प्रभवाथार्य भूतानाम धर्म प्रवर्तनम कृतम, जीवों की चेतना को बढ़ाने के लिए धर्म So to raise the consciousness, dharma or righteousness was introduced. तो क्यों सुन रहे हैं मुझे बताइए. So we are listening to this Bhagavatam Katha. So why are we listening? Are we going to remember everything? बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करने के लिए, Or do we want to just gather the कथा कीर्तन हमारी चेतना को शुद्ध करने के लिए. knowledge? No. The purpose is to purify our consciousness. धर्म का निरूपण किया गया है. And that is why dharma was introduced. धर्मराज है ना, तो ये सब प्रश्न उनको उठते हैं, हमको नहीं उठते. Then Yudhishthir Maharaj, who is the epitome of righteousness, he asked a very amazing question. He said that why is it then called dharma only? जीवों की चेतना को ऊपर उठाए, आत्मा का कल्याण करे, इसलिए धर्म का निरूपण हुआ. तो फिर इसे धर्म ही क्यों कहते हैं? इसे कुछ और कहते हैं? तब पितामह भीष्म बहुत सुंदर बात कहता है. Then Bhishma Pitama replies beautifully
the definition of this word dharma or righteousness. धर्मेण विद्रुता प्रजा यह स्याद्धारण संयुक्त सधर्म इति निश्चयः। इसे धर्म क्यों कहते हैं और क्यों और कोई शब्द क्यों नहीं? सो धारणात धर्म इत्याहु, धर्म इति आहु। इसे धर्म शब्द इसलिए कहते हैं, It is called dharma धर्म का अर्थ होता है धारणात, धारण करने वाला, because it means to धारण करने वाला। uphold. धारणात धर्म इत्याहु, Dharana means to uphold. आपको मुझे धर्म की डेफिनेशन, धर्म किसे मतलब धर्म शब्द का अर्थ, तो धारणात धर्म, धर्म वो है जो धारण करे। किसको धारण करें? तो कहते हैं धर्म। And what are we supposed to uphold? ये धर्म ही संसार के जीव को, धर्म ही संसार की प्रजा को धारण करता है। So this dharma is the only thing that sustains the population of this world. It not only sustains but also nurtures the population. They're not talking about the bodily platform but about the spiritual, spirit, soul level of a living entity. पितामह भीष्म ने धर्म के विषय में बहुत सारी बातें बताई, और धर्म से जो विपरीत है, धर्म का ऑपोजिट क्या है? अधर्म। तो अधर्म So what is the opposite of dharma? It is adharma. अधर्म की व्याख्या सूत जी ने बताई, and Suchi explains this to Parikshit Maharaj. लेकिन मूल अधर्म क्या है? धूतम, दूसरी लाइन में, धूतम पानम स्त्रिय सुना यत्र अधर्म चतुर्विधा। अधर्म बहुत प्रकार के हैं। He said there are types of adharma, सबसे बड़े माने गए हैं। but there are four धर्म major को समझने, types. क्योंकि आज अक्षय तृतीया के दिन धर्म का प्रवर्तन हुआ है, तो थोड़ा धर्म समझ लीजिए। तो धर्म को समझने के लिए अधर्म समझिए। श्रीमद् भागवत जी में अधर्म के विषय में कहा गया धूतम, धूतम माने जुआ, गैम्बलिंग। So it says that gambling is adharma. तो जुआ खेलना, गैम्बलिंग करना अधर्म है। So gambling is adharma and it could be of any type or kind. पानम माने नशा। Second is intoxication. That could be any intoxicant, tea, coffee, liquor, smoking, etc. So all these are type of adharma. And the third is associating with a woman who is not his wife, and vice versa is called adharmic or adharma. अधर्म है, नशा करना अधर्म है, अवैध संग करना अधर्म है, और चौथा कहते हैं सुना। And lastly, सुना माने अखाद्य वस्तु खाना, to eat whatever is not prescribed for humans to eat, that also is considered adharmic. So eating all these foods like meat, onion, garlic, etc. is adharmic. So now that we are celebrating Akshay Tritiya, we should also understand the glories
of this day and the importance of dharma in our lives. Then Yudhishthirji asked a technical question. Listen carefully. फॉर एन एग्जाम्पल 100 स्टूडेंट है और कोई प्रिंसिपल को कहे कि इन सबको स्कूल में ज्वाइन. He says that there are different dharmas for different people. So if 100 students are sent to a school, then the principal will interview them, and according to their capability, he will send them to that grade. लेकिन प्रश्न ये है कि चाहे सबकी योग्यता के अनुसार किसी को फर्स्ट ग्रेड में, किसी को सेकंड, किसी को थर्ड, किसी को फोर्थ, लेकिन so everybody will be going to the grades according to their capability, but gradually they are all going to pass and forward towards the university. If not today, then tomorrow, because then only they will get a certificate and they will be able to work. So he said, okay, you don't tell me the righteousness of the lower ये सब लोग धर्म करते 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 consciousness, but at least tell us the level of the university level which everybody has to follow one day, the topmost dharma. What is that Sanatan Dharma? आज कुछ लोग कहेंगे नहीं भाई मैं तो फलाने धर्म का पालन करता हूँ हमारे वहां. Somebody will say that I follow this particular religion and it permits me to eat onion, garlic and tea or tea coffee. But gradually then you will leave onion, garlic or intoxication. Gradually you will develop your consciousness. Then you will reach to that stage. You have to reach that stage. So Yudhishthirji asked, at least tell that righteousness of that topmost stage. And प्रभवाम्ययम् भक्ता नारायणं देवं दुर्गाण्य तितरन्ति ते. एक श्लोक समझ में आ जाए ना, पूरा धर्म समझ में आ जाए. If you understand this one verse which Bhishma Pitama has replied to Yudhishthira, then you will understand completely dharma. जो सभी जीवों का ईश्वर है, जो सभी जीवों का स्वामी है. He says that the Lord of all the living entities, that is Parameshwar or Bhagwan, and to perform pure devotional service towards the Lord is the topmost dharma or religiosity or righteousness. इस जगत को प्रभवाम्ययम माने क्योंकि उस ईश्वर ने इस जगत को प्रकट किया. Because that Lord has manifested this world, He is protecting and He is the destroyer of all this material world and the living entities. So the Lord who has provided us everything, then performing unalloyed devotional service to such Lord is the topmost dharma. So
serving this and that is not wrong, but the topmost level is to perform pure devotional service towards the Lord. And if Yudhishthir Maharaj asks, who is that Lord? Then Bhishma Pitama replies that Lord is Narayan himself. और यदि उस नारायण उस ईश्वर की भक्ति, कुछ लोग कहेंगे नहीं हम वो टॉप ग्रेड में जाना नहीं चाहते, हम जो ना ये So some might say that we don't want to go to the higher grade. यदि नारायण की भक्ति We want to stay in the lower level. टॉप ग्रेड में नहीं जाओगे और So छोटे-मोटे धर्म में if you don't go to the top grade and if you're entangled in the small paths of religiosity, then you will be stuck in this cycle of material entanglement of birth and death. यदि नारायण देव की भक्ति करेंगे तो क्या होगा? दुर्गाणी यत तरंती ते, ये जिस दुर्ग में जिस But if we perform devotional service towards the Lord, then we will cross this material world. Therefore, all living entities have to serve Lord Narayana as he is taking care of all the living entities. Then Yudhishthira Maharaj asked one more question. He asked, who is this Narayan? As we have one Narayan, that is Amit Narayan. कथा के बीच में भी आ जाता है, कब ये खत्म करेगा और कब कथा शुरू होगी, ऐसा भी लोग कहते होंगे, लेकिन आज जो कुछ भी है अमित नारायण प्रभु की कृपा से ही तो ये सब हो रहा है। तो एक नारायण तो यहाँ अमृत चर्चा में बैठा है। So there is one Narayan in this Amrit Charcha. लेकिन आप जिस यहाँ नारायण की बात कर रहे हैं, so the Narayan which about whom you are talking, who should be served to cross this material entanglement of this material world, then Bhishma Pitama replies beautifully in the next verse in front of your screen. महाभुजः सुहद भ्राता च मित्रं च संबंधी च तथाच्युत संबंधी तथाच्युत। हे बेटा युधिष्ठिर, तुम ये जानना चाहते हो नारायण कौन, जिनकी भक्ति करना जो संसार की उत्पत्ति प्रलय आदि? बोले वो और कोई नहीं, यह एष पितामह भीष्म शरसैया, बाणों की सैया पर। Bhishma Pitama said while sleeping on the bed of arrows, he said, the person who is standing next to you is Narayan himself. Then he replied that who has lotus eyes, and as the lotus is red, वैसे कमल रक्ताक्ष, उस कमल के समान रक्त आंखें जिनकी है, who has red colored eyes and who wears yellow clothes, who has long hands or arms. So Yudhishthira understood that he is talking about Krishna. So this Krishna whom you consider as your well-wisher, brother and friend,
who is your relative is no else than Narayana himself. He is Bhagwan himself. पितामह भीष्म कृष्ण की ओर देखकर कहते हैं, स्थित प्रिय हिते जिष्णु स एष पुरुषोत्तम। हे अर्जुन, ये जिष्णु, ये कृष्ण He says that this Krishna is Purushottam, that is the topmost in humans. So the Purusha of the highest in the Purusha avatar is Krishna. जो कृष्ण है तुम्हारी बाजू में खड़ा है, वो कृष्ण ही पुरुषोत्तम है। इसलिए बेटा युधिष्ठिर, and he is Purushottam, Krishna. And whatever work you do, बेटा अस्मिन अर्पित कर्माण, जीवन में जो भी कर्म करेंगे, whatever work you do, you should offer the fruits to Krishna for the same. And that is the Sanatan or topmost dharma or righteousness or religiosity. So people might do it by force, but Bhishma Pitama says that we should not do that like in that mode or mood. He adds this word, Sarva Bhaven, means that the fruit should be offered to the Lord in a smiling way. It should be done with love and devotion and not due to force or in distress. कृष्ण को कर्म अर्पण करने, बोले तू क्या, बड़े बड़े लोग कृष्ण को कर्म अर्पण करते हैं। अब देखो इससे भी बड़ा सिद्धांत पितामह भीष्म कहते हैं। Bhishma Pitama is giving the topmost philosophical point. He says, विविध स्तोत्र के द्वारा, अनेकों स्तोत्र के द्वारा बड़े बड़े देवता इस कृष्ण की रात दिन स्तुति करते हैं। he says that through different modes, all the demigods worship Krishna. And who worships him first is Vishnu. What does it mean? It means that Vishnu and Krishna are different. यद्यपि विष्णु कृष्ण से प्रकट हुए हैं, लेकिन उस भगवान विष्णु को भी कृष्ण को देखने की या कृष्ण की स्तुति करने की इच्छा होती है, और वे भगवान विष्णु भी कृष्ण की निरंतर स्तुति करते हैं। ये कौन कहते हैं? He constantly worships Lord Krishna. This is mentioned in Mahabharat Shanti Parva 108 chapter from Mahabharat. So people don't understand this concept and they think that Krishna manifested from Lord Vishnu, but it's vice versa. Lord Krishna is fundamental and Vishnu manifests from Lord Krishna, and such Lord Vishnu who manifested from Lord Krishna worships Lord Sri Krishna. And in Shrimad Bhagvat also there is a reference. वापस लाने के लिए कृष्ण और अर्जुन अनेक लोक In a लोकांतर में गए। Brahmana, multiple sons died, so they went to different places in search of those sons. So they went to Vaikuntha, and there Lord Vishnu told, I have stolen those children
he said that everybody is getting your darshan and opportunity to serve you, but I'm here taking care of this material universe. I had this desire to see you, so that is why I committed this offense and I took these children. You take them. I just wanted to have your darshan. Then, so that means that Lord Vishnu worships Lord Krishna. And then Indra is mentioned. Although Indra is not an ordinary living entity, he is the king of the 33 crores demigods. And it is mentioned in Bhagavatam that Indra worships Lord Krishna, and even Shambhu and Brahma, they all worship Lord Shri Krishna. And they offer their work to Krishna. So where do we stand? When these huge, great demigods worship Lord Krishna and they offer their work, the fruit of their work to Lord Shri Krishna, who are we to not to do the same or follow them? So this dharma was explained as it manifested or ever introduced on this day. So this is the seventh glory of Akshay Tritiya. There could be a question that it is such a pious day, what should we do today? So Lord Varahadev replies to Mother Earth, so this Akshay Tritiya is the date on which we can get the love of the Lord Hari Vallabha. So Hari is Lord Hari and Vallabha means love. And if today we do any kind of work, then work becomes immortal and it never gets diminished. So Mother Earth asked that there are so many types of works, then just give us what should we do. And Varahadev replies, he said, you should bathe in cold water early morning. So it's not any ordinary bath, it is the bathing from the holy rivers or holy waters. And what more we should do? We should donate as much as we can today, because the
charity done on this day becomes eternal. It never gets diminished. What more we should do? We should venerate भगवान की विशेष आरती विशेष पूजा अक्षय तृतीया के दिन। और क्या करना चाहिए? जपे जाप more, and we should chant the holy names. का जाप हम 2 घंटा करते हैं अक्षय तृतीया के दिन, ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. ज्यादा से ज्यादा जाप अक्षय तृतीया की। तो क्या स्नाने, So we should chant the holy names. बीच में एक छूट गया, श्राद्धे, आज के दिन श्राद्ध करना चाहिए। And Shraddhe. So even the ancestors should be offered. माता पिता को याद करके So we should remember our ancestors and we should chant for them, or we can do the service towards the cows or Vaishnavas, etc. Because today we can do the tarpan for our ancestors. He says that, oh Bhudevi, oh earth, so if someone does or do this, and then he does some charity or donation, इसलिए अंत में कहते हैं तस्याम ददति दानानि, जो दान करता है धन्यास्ते, उसको स्वयं भगवान धन्यवाद देते हैं। So the Lord himself thanks such a person. The Lord becomes indebted if we do charity today. धन्यवाद करते हैं। और वैष्णवान रहा, और आज के दिन दान करने वाले की गिनती वैष्णवों में, And a person who donates on this day is counted as a Vaishnava. So इस प्रकार से अक्षय तृतीया की ये बहुत सुंदर महिमा। आइए और एक महिमा अक्षय तृतीया के So दिन। let's listen to one more glory. So far we have heard about the 7 glories. So the 8th glory of this day is इस दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध। the biggest battle of Mahabharata was अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। concluded on this day of Akshay Tritiya. का अंत हुआ था। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूं, कुछ दिनों से I would pray to the Lord that the war between Ukraine and Russia, by the mercy of Lord, and the Lord inspires them so that this war, which is affecting kids, women, and men alike, may Lord protect people from such destruction. आप सब जानते हैं महाभारत के युद्ध यूं तो कौरव और पांडवों के बीच में था, लेकिन पूरी दुनिया के छोटे So you might be aware that although this war was between Kauravas and Pandavas, but people from every part participated. So this war ended, or this battle ended on this day after fighting for 18 days. And the battle was concluded. And how was that situation? See, you can see from Shrimad Bhagavatam, the verse in front of your screen. मृधे को
रवसृञ्जयानां वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु व्रीकोदराविद्व गदाभिमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा मृधे कौरव सृंजयानाम। कौरव और पांडव के बीच में घमासान युद्ध हुआ। So there was a ferocious battle fought between Kauravas and Pandavas, and there is sometimes a question arises in people's mind that there was no possibility of the war, but Krishna made this battle happen, and he let people get killed. So that is true. Because in Bhagvat Gita, Krishna himself says that whenever a dharma rises, then to establish righteousness or dharma and to destroy the demonic qualities I manifest on this material world. But still, we could have a question that the Lord, who is the master of everyone, why would he let so many people get killed? So Suchi replies here, everybody who died in this battlefield have all crossed this material world and have got liberated. What is written in the second line? All the brave hearts who were fighting in Kauravas or Pandavas side, they all got Veer Gati. But I would say that they got Vaikunt Gati because they went to the eternal abode of the Lord. Because Krishna was the charioteer, and what he used to do, because he is the Lord himself, whoever was about to die, he used to go there, and they used to die or leave their body seeing Lord Krishna. And in Bhagavad Gita, he himself has said that if you remember me at the time of death, or if they see me, then they will go to my eternal abode. तो कृष्ण क्या करते? उस महाभारत के युद्ध में जो मरते उनके सामने पार्थसारथी रूप में प्रकट हो जाते हैं. So Krishna used to manifest as Parsarthi in front of people who were about to leave their bodies, and they all went to Vaikuntha. And on the 18th day, that is Akshay Tritiya, so everybody was dead except Duryodhan. So what happened on this day of Akshay Tritiya? Only Duryodhana was left. And Dhritarashtra and Gandhari got to know that, and she told him to come naked in front of his mother. So I will see you and you will become as strong as iron. So on this day,
he was going to his mother Gandhari, but Lord Sri Krishna understood and he stopped him in between and he started laughing at him. Said that, why are you laughing? He said, you are so, you're not child anymore, and a mother has a motherly attitude, but at least you should keep some, you should have some etiquette. You should not go or approach your mother like that. So at least wear something. So he said, I have nothing here. So he gave him a banana leaf. So Gandhari opened her eyes and she made him ironclad. He became as strong as iron. And when she saw that he is wearing a banana leaf, Gandhari became very upset. She said that I wanted to make you eternal, but even today you haven't heard to my advice. So the portion where he was wearing that banana leaf, that part could not become strong. And on the 18th day, only Duryodhana was left, and Bhim had taken a vow to kill Duryodhana. So they had a fight. Bhim was filled with anger. So he rotated his club and attacked Duryodhana. And Duryodhana is standing still straight. He was not affected. Bhim tried so many ways, but nothing was affecting him. Bhim was unaware that Duryodhana is now ironclad. But Lord Sri Krishna advised Bhim that you should attack his thigh, as I had stopped him to get ironclad on his lower abdomen. So Bhim attacked and he realized that this is working, and he attacked him on his lower abdomen. And it's mentioned in this verse. Vrikodaravidva Gadabhimarsha Bhaganorudande Dhutarashtraputre. वृकोदर भीम ने, अब वृकोदर, ये शब्द आप देखिए, वृकोदर. So this word वृकोदर, हम लोग भीम को वृकोदर से क्या समझते हैं? भीम बहुत पेटू होंगे, बहुत मोटे होंगे, है ना? इमेजिन करते हैं. So we think that Bhim is obese or fat. But if you listen or read the interpretations of the Acharyas, then you will understand that he was not fat or obese. वृकोदर का अर्थ क्या है? वृक नाम की अग्नि जिसके उदर में है उसे वृकोदर कहता है. That means a person who has this vrik fire in his belly. एक अग्नि है.
So vrik is a kind of fire which is present in his और ये वृक अग्नि जो है ना, ये भोजन पचाने का tummy काम or करती है। stomach, and it makes the food digest. अग्नि थी, वो जितना खाते थे वो भोजन डाइजेस्ट हो So जाता whatever he used to eat, the food used to get digested. है। जो जरूरत से ज्यादा खाता So है और the जिसका person gets fat when people are unable to digest the food. बर्न नहीं होती, उसका वजन बढ़ता है, उसकी चर्बी बढ़ती, उसका पेट बढ़ता है। लेकिन जितना भी खाए, But a person who is able to digest everything, उसको जला दे, उसको डाइजेस्ट कर दे, तो उसका पेट बढ़ नहीं सकता। then how could he become fat? That proves that Bhim was not fat or obese. No doubt he used to eat a lot, but everything used to get digested because he had vrik fire in his tummy. For us to burn our calories, we have to work so hard. But Bhim had this भगनो उरु दंडे, उस दुर्योधन की जंगा टूटी और आज and he broke the thigh of Duryodhana, and today Pandavas won this battle or war against Kauravas. But in other kalpas, it happened on Amavasya, but in some kalpas it happened on Akshay Tritiya. So you have to listen about 25 glories. So let's take a small break and then we will continue further. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. So thank you very much, Ruji, for this wonderful Bhagavad Katha, जहाँ पर हम अक्षय तृतीया की महिमा को श्रवण कर रहे हैं और वन आफ्टर अनदर जो बहुत सुंदर सुंदर महिमा को आस्वादन करा रहे हैं आप। जैसे कि हमने सुना कि कैसे इसी अक्षय तृतीया के दिन त्रेतायुग का भी प्रारंभ हुआ था और सतयुग का भी प्रारंभ हुआ था, और साथ ही साथ ये बहुत ही सुंदर महिमा अभी हमने श्रवण की। तो कुल अब तक हमने 7 या 8 महिमा आस्वादन की, which was wonderful, और thank you Prabhuji for this wonderful अक्षय तृतीया महिमा। एंड हम दर्शन करते हैं हमारे श्री राधा गोविंद गौशाला के पश्चात कुछ सूचना है जो कि हम आपको देना चाहते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्ण। तो आज पुनः एक बार फिर से हमारे श्री राधा गोविंद गौशाला से ये दर्शन हमें प्राप्त हो रहे हैं, जहाँ पर आप सब भक्तों का सहयोग है जिससे कि हम सब इस सेवा को कर पा रहे हैं। विशेष हमारी ये जो भागवत कथा हम श्रवण कर रहे हैं, परमात्मा परिवार उनका सहयोग रहा है इस भागवत कथा के दौरान, तो हम उन्हें धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करेंगे इसी प्रकार से उनके लिए कि कृष्ण भक्ति उनके जीवन में और अधिक बढ़ती रहे। तो बहुत ही सुंदर हम यहाँ पर ये कथा श्रवण कर रहे हैं, और ये कथा हम गौ सेवा के माध्यम से कर पा रहे हैं। मतलब whoever wants to have Bhagavad Katha, they only have to serve these wonderful गौ मातास, so उनके बिहाफ में हमें ये भागवत कथा मिल रही है। तो हमारे परमात्मा परिवार को हम धन्यवाद करते हैं, और विशेष प्रभु जी को भी कि वह प्रतिदिन इस प्रकार की सुंदर कथाएं हमें श्रवण कराकर हमें और अधिक भगवत भक्ति की ओर उत्साहित करते हैं। तो आज हमने जैसे धर्म की महिमा के विषय में सुना कि धर्म क्या है, तो धर्म जैसे हमने प्रभु जी ने भी बताया कि कैसे आज जो अनेक महिमा है और उसमें धर्म की महिमा आई, और आज के दिन भी जैसे पितरों की सेवा करना चाहिए, पितरों का तर्पण करना चाहिए, और उसके बिहाफ में गौ माता की सेवा करनी चाहिए, और वैष्णव को
प्रसादम की सेवा करवानी चाहिए। तो ये सारी सेवाओं की आज महिमा है और हमारा सौभाग्य है कि हमें भारत में इसे 2 दिन आस्वादन करने को मिल रहा है, क्योंकि वैसे भी ये दिन एक्चुअली रेयर है, साल में एक बार आता है और हमें पता नहीं हमारे अगले क्षण के विषय में। तो आज ये क्षण हमें मिला है जहाँ पर हम सब इसकी सेवा करके उस अक्षय पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप इसमें अवश्य जुड़िएगा और ये जो पल हमें मिला है सेवा करने का उसे बिल्कुल भी मत चूकिएगा, क्योंकि बहुत सुंदर रामायण से हमें उदाहरण प्रस्तुत होता है जहाँ पर रावण भगवान लक्ष्मण जी को यह सुंदर उपदेश देते हैं कि जीवन में जब भी अच्छा विचार आए या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आए तब हमें उसे डिले नहीं करना चाहिए। तो जैसे रावण के जीवन में बहुत सुंदर विचार आया था, उनका विचार था कि कैसे मैं स्वर्ग जाने के लिए एक सुंदर सीढ़ी बना लूं जिससे कि लोगों को इतनी तपस्या ना करनी पड़े जिससे कि वो स्वर्ग जा सके। साथ ही साथ उनकी ये भी इच्छा थी कि वो समुद्र के जल को मीठा कर दे। समुद्र में जल इतना अपार है कि वो सफिशिएंट है, मतलब इस पूरी पृथ्वी के लिए, परंतु क्या फायदा, इट इज सॉल्टी है। तो ये उनके जीवन में बहुत सुंदर विचार आया था, बट बिकॉज ही डिड नॉट ही डिलेड दैट थॉट, ये उनके जीवन में अच्छा विचार आया जिससे उन्होंने डिले कर दिया और उसके परिणाम स्वरूप हमने देखा कि ये दोनों उनकी इच्छाएं अधूरी रह गई और वो स्वयं भगवान को प्राप्त हो चुके। और उनके उपलक्ष्य में उनको जो बुरा विचार आया था उन्होंने उसको पहले किया, जिसके फलस्वरूप ही सफर्ड अ लॉट। तो हमें इससे सीखने को मिलता है कि जीवन में ये जो अच्छा विचार या अपॉर्चुनिटी आती है उनको तुरंत ग्रैब कर लेना चाहिए। और यहाँ पर बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी है आज हमारे बीच में। अक्षय तृतीया का पर्व हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जहाँ पर हम अनेकों वैष्णव तथा हमारे सुंदर गौ माता को हम we are going to feed them, we are going to give them happiness what they are actually deserving। तो बहुत सुंदर यह कार्यक्रम हम संपन्न करने जा रहे हैं हमारे श्री राधा गोविंद गौशाला में। और आप सबसे भी हम निवेदन करते हैं कि आप सब भी इसमें जुड़िए और अपना यथाशक्ति सहयोग कीजिए जिससे कि हम इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में श्री गौ माता की सुंदर सेवा कर सके और भगवान की कृपा को प्राप्त कर सके। तो आज ये अक्षय तृतीया के हम जो 8 महिमा श्रवण कर रहे हैं उनमें से एक महिमा ये भी है कि गौ माता की सेवा करें, वैष्णव भोजन की सेवा करें। तो ये सुंदर आयोजन हम कर ही रहे हैं श्री राधा गोविंद गौशाला में। आपको स्वयं से कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप अपने स्थान पर बैठकर भी केवल अपना सहयोग प्रदान करके इसका लाभ ले सकते हैं, संकल्प करके भी आप सेवा कर सकते हैं। तो आप सबसे निवेदन है आप इसमें अवश्य सेवा कीजिए और इस सेवा के लिए आप हमें अप्रोच कर सकते हैं ऑन आवर नंबर विच इज यू कैन सी इन द स्क्रीन राइट नाउ, 7567545555 एंड देन +2012150913। इन दोनों नंबर के माध्यम से आप अप्रोच कर सकते हैं आज के इस पवित्र दिन की महिमा और सेवा के लिए। सो पुनः एक बार फिर से हम निवेदन करते हैं प्लीज आप अवश्य जुड़िएगा और इस अक्षय पुण्य की प्राप्ति में आप भी अपना यथाशक्ति सहयोग कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। आइए श्रवण करते हैं शेष कथा आज इस प्रभु जी के मुखारविंद से। हरे कृष्ण। वेदान युगान्ते तमसा तिरस्कृतान्य तनुरंगविग्रह प्रत्याददेवे कवये भीया यचीते तस्मै नमस्ते वितते हिताय इति। अक्षय तृतीया
सो श्री अक्षय तृतीया की 9वीं महिमा, So the 9th magnificence or glory of Akshay Tritiya is mentioned in this verse. नृतरंग विग्रह। क्या हुआ? ब्रह्मा जी के पास वेद है। So it so happened that Brahma ji has the Vedas, so he reads them constantly and preaches them constantly. लेकिन वो वेद युगांते किसी एक युग का अंत हो रहा था, But during the ending of one yuga, तमोगुण प्रधान जिसमें है ऐसे असुर, ऐसे दैत्य, then the demons अब युग who का अंत have था, माने ब्रह्मा जी की रात्रि हो रही थी, ब्रह्मा के हाथ में who वेद have और रात्रि these में ब्रह्मा के demonic हाथ में quality तपस्या। or ignorance, and as नहीं आपको the हाथ में night होती है, पढ़ते हैं, for जब माला Brahma गिर जाती ji है, was approaching किसी के and ऊपर he माला गिर जाती है, just winked. तो वेदान ब्रह्मा के हाथों में वेद है, युगांते हमारे लिए युग का अंत, ब्रह्मा जी के लिए दिन का अंत। So माने दिन के the अंत का night was approaching from Brahma ji, and for us the yuga was ending. तिरस्कृतान, So ब्रह्मा जी को जब की आई होगी तो वो वेद गिरे, असुरों ने चुरा लिए। Brahma ji just winked and अब असुरों ने the वेद Vedas चुराए, fell from असुरों ने Brahma वेद ji's नहीं hand, चुराए होते तो अच्छा and था। these भाई demons असुर पढ़ेंगे stole तो them. किधर जाएंगे? So असुर had they पढ़ने वाले थे, stolen them to इन्होंने read, वेद then चुराए, it would have तो been वेदों से कौन benefited मतलब them. था? But they have no concern, वेदों से क्या लेना देना? असुरों and they को, had nothing to do लेकिन with बस ब्रह्मा को Vedas. परेशान करना But था, just to distress Brahma परेशान ji, करना, अपना काम हो गया। हमको थोड़ी ना वेद they पढ़ने stole the हैं। Vedas. तो वेदान युगांत तमसा तिरस्कृतान, उस तिरस्कृतन माने उसको चुरा लिया, और चुराकर रसातलात यह, वे रसातल में चले गए। And they went to the lower planetary system. And when ऐसा होता है, he lost the Vedas, वैसे हम लोग Brahma ऐसे ji करते नहीं, हरिनाम became जप करते distressed. नहीं, माला करते हुए सो And जाते हैं, लेकिन अचानक किसी दिन माला खो जाए, हम कोई नहीं so बोलते, it so happens with us also, like if we we don't care much where we chant, and sometimes we fell asleep. But if we keep it somewhere and we're not able to find it, then we become distressed. हाथ में वेद थे, नींद आई, लेकिन वेद चुरा कर ये असुर भागे, ब्रह्मा जी So, की नींद उड़ गई। so Brahma ji became distressed. असुरों के साथ युद्ध कैसे करते? And how is he going to fight with the demons? He requested the Lord to manifest, और उस वेद को वापस ला कर दीजिए। and please provide me the Vedas back. समुद्र में गए, He said that where have they gone? He said they went to this. यस, तो बोले मछली का अवतार लोगे? बोले मछली तो मैं बन चुका हूँ, अब की बार नया बनने He वाला हूँ। said that I have already taken the so but today I will take a different form. I'll become a horse. So he took the form of a high grief. देखिए ये भगवान का अवतार, अद्भुत अवतार है। ये भगवान विष्णु और महिमा, This is Lord Vishnu's आज के दिन है, ये आज के दिन की बलिहारी है, and it happened on this day, that is the day of Akshay Tritiya. और श्लोक में भी आप नीचे देख सकते हैं, भगवान हयग्रीव अवतार धारण कर क्या लिखा है? नृ तुरंग। भगवान ने कैसा अवतार लिया? नृ और तुरंग। नृ मनुष्य, तुरंग he took the form of a जैसे Nri means human, and
means चतुर्दशी आने वाली है, आप शब्द को पकड़िए, the horse. लाइन का अंतिम शब्द देखिए, आपको आनंद आएगा। क्या लिखा है? नृतुरंग, ठीक है? तो हम लोग नृसिंह तो जानते हैं, नृसिंह। So we know Narsingh is Nar plus the lion, but here it is Nruturing. So Nri means human and Turang means horse. So he took this incarnation as Hygriv. His half body is human and half horse. उस मूर नाम के असुर का वध किया और उस असुरों से This वेद Hygriv went to the sea and he took the Vedas from him and gave it back to Brahmaji. लीला है भक्तों। देखो भगवान घोड़ा भी बनते तो कितना अच्छा लग रहा है। When the Lord takes the form even of a horse, he looks so beautiful. तुरंग विग्रह घोड़े का रूप धारण करके प्रत्याददे माने वो जो वेद था वो लाकर वापस ब्रह्मा जी को प्रदान कर दिया। So he returned the Vedas to Brahmaji. ऐसे भगवान हयग्रीव, और भगवान का नाम हुआ And हयग्रीवा। this form of the Lord was named as Hygriv. हय माने घोड़ा, So from neck is high, and grief means horse. So that is why he is called Hygriv. तो ये और एक महिमा है, अक्षय So this is one more की महिमा। glory of this और day. आज के दिन क्या हुआ था? And what happened आज ही के on this day? कुरुवंश की सभा में पांचाली On this day, द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया था। Draupadi was tried to disrobe on this day, पांडवादी हार गए, अपने आप को हार गए, as all the Pandavas have शस्त्र को हार गए, got और अंत में अपनी defeated in the gambling match. क्या नहीं करेगा। A gambler can do anything. He put his wife in the gamble दुशासन को कहा जाओ, and they lost. हमें लेकर आओ। And Duryodhana asked Dushasana द्रौपदी के बालों to bring को Draupadi. हुए He की तरह fetched द्रौपदी her को कुरुवंश की सभा में लेकर आता है। with her hair, दुर्योधन कहता है कि इसे निर्वस्त्र करो। and he was asked to disrobe Draupadi by पास जाती है, Duryodhan. के पास जाती, She goes के पास to जाती, लेकिन कोई उनकी रक्षा नहीं। Bhishma, Dhritarashtra, and even Pandavas, but nobody comes to her help. Dushasan is trying to disrobe. कृष्ण ने आने में देरी की, मैं आपको सर्टिफिकेट दे रहा हूं ना, लेकिन No doubt Krishna came late, but जब तक there was one reason. संसार में अन्य Until किसी the पे भरोसा point रहेगा, the तब तक भगवान नहीं। living entity is हमें हमारी शरणागति, under भरोसा the पूर्ण शत प्रतिशत shelter होना चाहिए। or द्रौपदी ने जब protection of पति पर others भरोसा रखा, कृष्ण नहीं आए। till the time she had faith in her husband. भीष्म Krishna didn't appear. राष्ट्र के ऊपर भरोसा रखा, कृष्ण नहीं आए। अरे अपने आप पर भरोसा रखा, She साड़ी को पकड़ने का, tried to protect herself कृष्ण नहीं। on her own endeavor, but Krishna never appeared. और अंत में जब सब But ultimately, when she lost faith in everyone, even herself, वो भरोसा माधव कृष्ण गोविंद की ओर कर then दिया। she raised her hands करके द्रौपदी कि and संसार में किसी का भरोसा नहीं रहा, कृष्ण she surrendered to Krishna, saying that I don't have trust in anybody except you. And Krishna appeared. और जैसे ही कृष्ण को पुकारा, When she surrendered totally, तब द्रौपदी still Krishna didn't manifest. Then Draupadi said, मेरो क्या बीन
गड़े गो ए मुरारी मेरो क्या बिगड़े गो जाएगी लाज तिहारी मुरारी मेरो क्या बिगड़े गो जाएगी लाज तिहारी मुरारी मेरो क्या बिगड़े गो। द्रौपदी कहती है कृष्ण कृष्ण हमें तारा मानसो छिए। Draupadi says that we are considered as your devotees and we have surrendered to you, and if you don't appear, then it will be infamy for you. तेरू कहाँ के जाऊं कहाँ अब तेरे ही नाम की फैट कसी है तेरो ही आसरो एक मलोक नहीं कोई मन में दूजी जसी है हे हो मुरारी पुकारी कहूं अब मेरी हंसी नहीं कृष्ण कन्हैया तेरी हंसी है। आज यदि इस If कुरुवंश today in this assembly of Kurus मेरी हंसी नहीं I will be disrobed, then it will not be my infamy, but it will be your infamy, because we have surrendered completely on you. जब इस प्रकार से द्रौपदी ने पुकारा And when she called Krishna in such a manner, Krishna was in Dwarika. He jumped from his throne and started running. रुक्मणी जामवंती आदि पूछती रह His wives kept on asking, but का समय प्रभु के पास नहीं। गरुड़ he didn't even bother to answer them. He rode his Garud or eagle. He jumped and then he sent the cloth. Look at the mercy of his Krishna, who took so many forms. And today, on this day of Akshay Tritiya, to protect Draupadi, he took the form of cloth. He himself became the robes of Draupadi. Hari Radhe Shama 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 Radhe Shama Shama Karuna Kar द्रौपदी पुकारी पट में लिपट गए बनवारी करुणा कर द्रौपदी पुकारी पट में लिपट गए बनवारी निरख रहे नर नारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। इस प्रकार श्याम सुंदर कृष्ण प्रकट हुए। So, Shyam Sundar manifested and protected Draupadi. Bilva Mangal Thakur writes in Damodar Stotra, मथ पांडवाना दुशासनेना हतवस्त्र केशा कृष्णा माने द्रौपदी कृष्णा तदा क्रोशदनन्य ना था। उस दिन द्रौपदी ने क्या कहा था? गोविंद दामो दरमा धवेति
गोविंद दामोदर माधवेति। तो इस प्रकार आज ही के दिन द्रौपदी के पुकारने पर, So on this day, on behest of Draupadi, Lord manifested. So this is one other glory of Akshay Tritiya. આમ વાર્તા રે વાર્તા બાબુ ઢોર ચારતા ચપટી બોર લા એક એક બોર કાઢું છું, એક એક બોર हैं और एक कोतला में से और एक निकालो हैं? वो जो मदारी आता है ना खेल दिखाने वाला, एक के बाद एक खेल निकालता है, 25 खेल निकालने हैं यहाँ पर। और एक महिमा सुनिए भक्तों, 11वीं महिमा। So the 11th glory of this day, हरिदास के द्वारा प्रकटित, केवल भारत नहीं पूरी धरती, पूरी ब्रह्मांड को लुभाने वाले बांके बिहारी हैं। हमारे तो भगवान श्री कृष्ण का नाम है बांके। Lord Shri Krishna's Banke Bihari form, who is not straight, देखो ये खड़े भी रहते हो तो टेढ़े खड़े रहते हैं, he stands इसकी बोली भी टेढ़ी, not never straight. रहते हैं, ब्रज की गलियां भी टेढ़ी, He speaks यमुना में in a twisted language. यमुना भी टेढ़ी, Even the river in which he bathes, Yamuna, is not straight. His pastimes are not straight. आधा घंटा ज्यादा ले लेता है, कभी 1 घंटा ज्यादा, पूरी परंपरा में सब उतरा है टेढ़ा। फिर कल आप लोग मत कहना हम श्रोता भी टेढ़े हैं, यहां तक ठीक है, इसको आगे मत बढ़ाना। तो मैं ये 11वीं अक्षय तृतीया की आज की और एक अद्भुत महिमा ये है कि साल भर बांके बिहारी जी दर्शन तो देते हैं, Throughout the year, Banke Bihari gives darshan, but तृतीया यानी कि आज बांके बिहारी जी only on this day we can see the feet, the lotus feet of Banke Bihari ji. So let's request Govind TV. श्री बांके बिहारी लाल की। आज के दिन श्री बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन है। देखो बांके बिहारी है तो एक तो बनता है, हे मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो। કેટલો શ્રृंगार કર્યો, श्रृंगार नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, तेरी सूरतिया पे मन मेरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मेरा अटका, प्यारा सा लागे तेरा पीला सा पटका, प्यारा सा लागे तेरा पीला सा पटका, ये तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, मेरे बांके बिहारी लाल तेरी मुरलिया पे मन मेरा अटका, प्यारा सा लागे तेरा नीला सा पटका, हे तेरे गुंगवारे ये बाल, तेरे गुंगवारे ये बाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी,
नजर तो है लग जाएगी हे मेरे बाके बिहारी लाल। तो आज के दिन की ये 12वीं महिमा है कि आज के This दिन is the 12th glory of this day. No, the 11th glory of this day. That today we can see or have the darshan of the lotus feet of Bhagya Bihari.